Understood now? So student, here is the syllabus and also the marks, that is 50. Maximum marks are 50. Then everyone listen carefully. Day after tomorrow, that is Saturday onwards. Saturday I will not be there, and again 4 to 5 days. So timetable is here. It will be pasted, and according to that you can follow. You also can write down, note down in your book, and see that on which day you are coming, students. Saturday. Saturday and Tuesday. Thursday and Saturday. Okay. So 3 terms are there, so that I will write down. So you can write down your chapter number and date. So Saturday 26th, write down chapter 10. Chapter number 10. Students, not for you. These students, those who are present today, their turn is on Saturday. So you will be giving the exam of chapter 10. समझ में आ गया? So for you people, first you write down. Just wait, students. Online students, wait. Saturday chapter 10. Then Thursday, na? Yes, ma'am. Thursday, that is 3. 3. That is Tuesday, Thursday and Saturday. हाँ, तो Tuesday छुट्टी रहेगी ना, क्योंकि वहाँ शिवरात्रि है. So Thursday chapter 13. And next Saturday 5th 5-3. So write down light chapter. Okay. तो ये हो गया तुम्हारा. उधर समझ में आ गया? Yes, ma'am. सैटरडे को है 10th चैप्टर, थर्सडे को है 14th चैप्टर, सैटरडे को है 15th चैप्टर लाइट फॉर यू. नाउ ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज note down your timetable, note down the timetable. It will be pasted here also. So tomorrow you are coming, tomorrow also you can note down, but just write down. Chapter number 11. Then Monday. Ma'am, can you write hours? Yours is 26. Number 3. थर्ड को तुम्हारा 14 चैप्टर और सैटरडे को 15 है. 15 चैप्टर हो गया ना? किसी को डाउट? No, ma'am. Rishi Kalapati, this is chapter wise revision test, not annual exam timetable. ये सैटरडे से फॉलो होगा because I will not be there in the class. समझ में आ गया? Yes. Rishi, did you understand? Rishi, I am not there, so those who will come for substitution, these teachers they will conduct. आपको क्या करना है? बस टेक्स्ट बुक निकाल के दे देना है कि सर ये क्वेश्चन. Otherwise, you can come forward. You can
write down the questions also from the exercise. जो lesson का test है, for example, on Monday it is chapter 11. Chapter 11 का जिसका handwriting अच्छा है, आप इधर आ जाएगा और 5 questions लिख लेगा और जाके बैठ जाएगा और start कर देगा. Teacher will be there and he will give the instruction. And you only tell the name, otherwise they will go there and they will write. तो जिनको आगे लिखना है बस लिख लेगा, जिनका हैंडराइटिंग अच्छा लिखना है या फिर सब रहेंगे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा. Yes, you have to revise these chapters only in class. These chapters, this day, your test will be conducted, revision test will be conducted. Understood now? Yes, ma'am. Clear to all? Clear to all? समझ में आ गया? और किसी को कोई डाउट है? And whatever you will write in the book or page, you have to submit it here. सबमिट करके चले जाओ, दूसरे दिन फिर से कोई बुक लेके दूसरा आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 2 ही है आपके इसमें, so you can just write it and submit it there. After coming I will check. Okay? Yes, today is number 17, no? So tomorrow will be number 16. 16 तक हम पहुंचे नहीं है वैसे. Tomorrow lesson number 16. Tomorrow I am there. तो यहाँ लगा देना या वहाँ लगा दो. Better if you are keeping it here. Anybody is having the sellotape? है क्या? नहीं है. वहाँ पिन है. पिन भी है या नहीं है? Not a single pin. तो कहाँ पर लगाओगे फिर इसको? Just see image वहाँ पर है क्या पिन या कुछ ऐसे? Okay. So let us start with the lesson that is फिर हम ये वो क्लास में देखकर आ जाओ. ये देखकर आ जाओ. उनको बोलना कि वहाँ yes stapler. हाँ stapler कर दो. No, she is having stapler. Take it. Staple it on the board. Yes, I'll give it. So let us start with the lesson, that is lesson number 17. What is our lifeline? So in this lesson mainly what is the importance of forest? Already this last chapters are based. जैसे water है, so importance of water. Forest है, so importance of forest. Okay, so it is given. Now in this chapter mainly what is the importance of forest, how it helps in the atmosphere, that means in the environment for the human beings and for everyone, is how it is helpful, how it is linked with the living beings and non-living beings. Understood? That means number of cycles like oxygen cycle, water cycle, carbon dioxide cycle, how it is dependent on the that is on the forest. Because if forest is not there, there is
there will be no balance in the nature, and oxygen will not be there, carbon dioxide will not be there, like this. So all this thing is given very in detail. Then the next thing is the habitat of animals. Some animals live on trees, some animals live on land, that is terrestrial animals. How they are dependent on the forest. Even if one tree is cut, you will see that so many other animals they miss. Not only their shelter is destroyed, but some of the animals, some of the small insects or some of the species, they might be extinct also. बिकॉज पर्टिकुलर स्पीसीज जो है कभी कभी आपने देखा होगा छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसी पेड़ पर रहते हैं एक बार वो पेड़ चला गया या कट हो गया या दूसरे पेड़ पर नहीं जाते हैं तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक पूरी स्पीसीज जो भी वो भी डिसअपीयर हो सकती है या एक्सटिंक्ट हो सकती है so that is the importance of the forest then all the living beings how they are dependent on the forest that means the water that we get the rain that we get due to the forest the oxygen that we get due to the forest the food that we get the shelter that we are getting not we means all the animals including all the animals so how all are dependent on the forest and at the last how to conserve the forest okay इसका इम्पोर्टेंस तो दिया ही है कि वाटर को कैसे वाटर का इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट इट हेल्प्स इन कंजर्विंग द वाटर बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट इट हेल्प्स इन कंजर्विंग द ऑक्सीजन the amount of oxygen which is present in the air that it also helps in the rainfall and it helps that means ultimately if we see it helps for the living beings for the existence of the living beings जैसे सिर्फ पानी ही जरूरी नहीं है हमारे लिए तो पेड़ भी जरूरी है क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी मिलता है पेड़ से हमें फूड भी मिलता है और इनडायरेक्टली पेड़ से हमें पानी भी मिलता है ना समझ में आ गया तो पानी पेड़ नहीं देता है बट इट हेल्प्स in formation of the clouds etc understood now so this is what the importance of the forest now first question explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate पहला क्वेश्चन है how the animals which are present or which are living there help to regenerate the forest how you will explain but क्या है वो तुम लोग सभी ने पढ़ा है yes image have you read it have you read हाँ नहीं अभी ये ठीक किया कब करेगा क्या yes वो भी मैं asking stand up I will read the question answer. क्यों? हाँ? तो कब करता है? See, I don't want the reasons. I don't want this kind of excuses that you are not doing the class. मेरी गलती है. तो क्लास नहीं करोगे दूसरे दिन आ जाओगे. You will not do the class also, you will not attend the class also, and then next week you will come and you will say, I don't know this, I don't know that. What is this? Alternate days are given means you should watch the class, you should be there in the class. Did you understand? Then, now today I have given the work, today I have told you to revise. Now don't give me such kind of excuses. Now all of them are knowing that the next day revision is going on. Every day don't wait for me. Already I have given the timetable also.
Now don't say that I don't know like this. Timetable is displayed, everything you know that, so you should understand. No excuses, nothing. And now syllabus is given, timetable is also ready. Final exam का 14 या 15 से आपका एग्जाम भी शुरू होने वाला है. अभी कितने दिन बाकी है? ऐसे ही करते रहोगे? Yes, Mantar. Did you read the test book? आके बैठ गए वहां पर. Yes, so answer is here that Alice has given the answer. The animal's excreta is good for plants and many saplings grow on it. The excreta is also converted into humus by the decomposers and is used as a manure in forest. So they also how it regeneration में कैसे काम आते हैं? तो जो ये लोग खाते खाते बहुत सारे एनिमल्स और animals and birds, they feed on the fruits which is available in the forest. When they excrete, this excreta also contains the seeds. तो seed dispersal भी हो जाता है, seed का germination भी हो जाता है. और वो लोग वहीं पर रहते हैं, वहीं से खाना खाते हैं और वहीं से रिजेनरेट होने के लिए हेल्प भी करते हैं. जो डिकम्पोजर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं? दे सपोर्ट एंड इस इन दिस वे जो भी डेड या डीके मटेरियल है दैट इज गेटिंग डिकम्पोज्ड एंड अगेन द न्यूट्रिएंट्स आर मिक्सिंग इनटू द सॉइल. Nutrients get mixed into the soil. Again, the new saplings, the new seeds which are coming, they will take the same nutrients and they will grow. ये होता है regeneration. Understood now? हाँ, yes madam. बताने के बाद सबको आ ही जाएगा. हमारा काम क्या है? स्कूल में आना है, बैग लेके वापस जाना है. So come tomorrow also, take the bag, come to the school. पढ़ाई करना नहीं है. Next, explain how forest prevents the flood. Explain how forest prevents the flood. ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हर साल हम सॉइल कंजर्वेशन में भी पढ़ते आए हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भी सेम है. ठीक है? Trees catch the soil only, so the water don't take it away. So in the future, floods are avoided. So say once again loudly. trees catch the soil only, so the soil is not washed away by the water. It helps to regain the soil and because Trees नहीं, the roots they hold the soil firmly. ये सबको पता है. Roots of the plants they hold the soil and then only they are growing strong. Understood? So when they are holding the soil firmly, what happens? The water which is coming, that means the water as well as the soil does not get eroded. Soil erosion भी नहीं होता है और ये जो रूट सॉइल को पकड़ लेते हैं तो सॉइल के कारण फिर पानी जो है वो भी क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है और फ्लड जो आने वाला है वो नहीं आता है. या फ्लड इज प्रिवेंटेड एज वेल एज दिस roots and the plants, they form the obstacle between the water. और इस तरह से so understood now? The next one,
जितना फॉरेस्ट रहेगा, फॉरेस्ट है मीन्स सॉइल जो है वो ज्यादा फर्टाइल है, बिकॉज मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर, more moisture is there in the soil, because the forest is acting as a shelter, it is acting as a cover for the other, it's like the sun or rain, and direct exposure does not happen. डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है या डायरेक्ट बारिश नहीं आती है, तो ये जो सॉइल है या ये जो हम कह सकते हैं बाकी जो छोटे छोटे प्लांट है वो बच जाते हैं, और ये जब बच जाते हैं तो ये और ज्यादा जो सॉइल है वो और ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, और व्हेन इट बिकम्स मोर फर्टाइल इट इज लूज एंड अगेन बिकॉज इट इज लूज सो इट कैन एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर, तो जितनी ज्यादा फर्टाइल रहेगी सॉइल उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो इसीलिए फॉरेस्ट की सॉइल जो है वो अच्छी सॉइल होती है, लूज होती है, फर्टाइल होती है, तो पानी बारिश आ जाता है तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। यस, Can microorganisms survive in the forest? व्हिच वन? Can microorganisms survive in high temperature? यस, माइक्रोऑर्गेनिजम्स सर्वाइव एवरीवेयर, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, जैसे कि बॉइल, जैसे हम मिल्क को बॉइल करते हैं, ज्यादा बॉइल करो तो ही मर जाते हैं, या ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म, अदरवाइज गर्मी में भी रहते हैं, हॉट टेम्परेचर में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, so many answers are there. What are decomposers? Name any two of them. Organism that break down that organism that break down dead bodies, dead material, convert it into humus is called decomposers. An example of fungi and bacteria. Fungi and bacteria. So fungi, bacteria, ये जो जितने भी microorganisms हैं, they act as a decomposers, and decomposers are also very very important. Sit down. Next, so the example is bacteria and fungi. Explain why there are no waves in a forest. Explain why there are no waves in the forest. Yes, Pranati. The forest raises biodiversity so that decomposers So forest means all forest is full of living beings, whether plants or animals. सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही हमें देखने को मिलते हैं, और प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब क्या है? लिविंग बीइंग्स हैं। लिविंग बीइंग्स दे आर बायोडिग्रेडेबल, यानी कोई अगर मर जाता है या कोई पार्ट खराब हो जाता है वो डिकम्पोज हो जाता है इजीली, एंड सो दिस इज वी कैन से दैट no part is in the waste. That means again it is getting decomposed as well as the soil of the forest. It absorbs these nutrients. मरने के बाद जैसे ऑलरेडी डिकम्पोजर्स तो है डिकम्पोज करने के लिए, लेकिन वो सॉइल में बाद में चले जाते हैं। सॉइल में चले जाने के बाद वही न्यूट्रिएंट्स वापस से छोटे छोटे सीड्स या प्लांट्स उसको लेके ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये पूरा साइकिल है, इट इज गोइंग ऑन। प्लांट्स आर डाइंग, प्लांट्स दे डिके, प्लांट्स आफ्टर डिकेइंग they are converted into simple form of like solution, they get dissolved into the soil. Again some of the seeds they fall on the ground or in the soil. Again these seeds they start germinating by taking the nutrients from the soil. Understood now?
तो इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, वहां कोई प्लास्टिक नहीं रहता, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है। जस्ट इमेजिन फॉरेस्ट मीन्स फुल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, एवरीथिंग इज नेचुरल। अंडरस्टूड? Yes, that means some animals when they die, they are eaten by the scavengers also. Scavengers जो होते हैं, scavengers यानी हाँ vulture वगैरह जो dead bodies के ऊपर feed करते हैं। Next, another. Explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide. तो ये तो सबसे सिंपल है, सबको पता है कि फॉरेस्ट क्या करता है, हमें क्या देता है, हम फॉरेस्ट को क्या देते हैं या प्लांट्स को क्या देते हैं। एनीबडी? ओनली टू हैंड्स आर ऑलवेज रेजिंग। व्हाई? यस। The forest plants consume carbon dioxide and release the oxygen by the process of photosynthesis. हो गया? Sit down. Plants make food in the process of photosynthesis. In this process, they need sunlight, carbon dioxide, and water. And after making this food, glucose plus oxygen is released. Oxygen is released to the air, and glucose is stored in the plant. Through which the cycle of oxygen and carbon dioxide is maintained. So you can see that oxygen is required for us, that is animals. Carbon dioxide is required for plants. Now here there is a balance. We take oxygen from the plants, we give carbon dioxide. This carbon dioxide is taken by the plants and they give us oxygen. These, when they give oxygen or when they produce oxygen, that process is called as photosynthesis. तो इनके पास प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। And this carbon dioxide, this taking of carbon dioxide and giving oxygen will make the balance, will maintain the balance of oxygen and carbon dioxide on the earth. लेकिन हम इस बैलेंस को रखना नहीं चाहते हैं। क्यों? Because we are only clearing the forest, we are cutting the trees. हमें पता है कि प्लांट हमें चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें ऑक्सीजन देगा, लेकिन हम लोग ये है जो ट्रीज को कट करते जा रहे हैं। यानी हम हमारे ही पैर पे क्या कर रहे हैं? कुल्हाड़ी मार रहे हैं। Understood everyone? So this is how the balance of carbon dioxide and oxygen is maintained. Next. Least 5 products we get from forests. Wood, spices, gum, paper. Timber, spices, oil, medicines, wood. Yes. So many means almost everything we get. And almost जो भी चीजें हैं, जैसे खाने की चीजें हो या मेडिसिन हो, हर्ब्स वगैरह हमें वहीं से मिलता है। फिर टिम्बर है घर बनाने के लिए, घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो मेनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। At what the bell rings? Bell का 2 minutes are left. 2:15 को 30 minutes ago. Yes. Just wait. So everyone have understood the timetable. Timetable means timetable of revision, Yes, sir. not the annual exam. नहीं तो बोलोगे कि मैडम ने annual exam कर दी थी।
link I am sharing, students. And another thing is that even though I am not there, whatever the doubts you have regarding the lessons which revision is going on, note down the doubts. समझ में आ गया? Doubts को note down करो और बाद में जब हम आएंगे, now we will discuss the doubts. क्या हिमेश? Understood? पढ़ाई नहीं करेगा तो मार पीट देगा. Yes. So thank you, students.